दोस्तों, अगर डिक्टेशंस पसंद आएँ तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, बेल के साथ दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली डिक्टेशंस टाइम टू टाइम समय पे मिल सकें। थैंक यू। Start. This joint second motion petition under sections 230 and 232 of the Companies Act 2013 in bracket Act bracket out is filed by the petitioner companies in terms of Rule 15 of the Companies in bracket compromises, arrangements and amalgamations bracket out rules 2016 in bracket rules bracket out for the sanction of scheme of amalgamation of Samrat Mercantiles Private Limited in bracket transferor company number 1 bracket out and Neelkant Trading Company Private Limited in bracket transferor company number 2 bracket out and Creative Granites Private Limited in bracket transferor company number 3 bracket out being referred to as transferor companies with Kuber Creations Private Limited in bracket transferee company bracket out full stop. The joint petition is maintainable in terms of Rule 3 in bracket 2 of the rules full stop para. From the records, it is seen that the first motion application seeking directions for dispensing with the meetings of the equity shareholders, secured creditors and unsecured creditors of the applicant companies was filed before this tribunal on 29/3/2019 wide CA in bracket CAA bracket out number 75/230/232/JPR/2019 and based on such joint application moved under sections 230-232 of the Companies Act 2013, directions were issued by this tribunal wherein the meetings of equity shareholders, secured creditors and unsecured creditors of the transferor companies and transferee company were dispensed with wide order dated 3/9/2019 full stop para. Thereafter, the petitioner companies filed second motion joint petition before this tribunal on 11/9/2019 within the time prescribed full stop. Consequently, the matter was listed on 13/9/2019 and following orders were passed para first. The date of hearing of the petition filed by the petitioner for the approval of the scheme is fixed on 11/10/2019 full stop para. Second, notice of the hearing shall be advertised in the newspapers, namely Rajasthan Patrika, Jaipur edition and Times of India, Jaipur edition, not less than 10 days before the aforesaid date fixed for hearing full stop para. Third, in addition to the above public notice, each petitioner company shall serve the notice of the petition on the following authorities, namely central government, jurisdictional income tax authorities under which the petitioner company is assessed, indicating clearly the PAN number, Registrar of Companies, Jaipur full stop, Competition Commission of India, as well as other sectoral regulators which may govern the working of the respective companies involved in the scheme at least 30 days before the date fixed for hearing of the above petition full stop para. Fourth, further notices shall also be served to objectors or to the representatives as contemplated under subsection in bracket 4 of section 230 of the Companies Act
who may have made representations and who have desired to be heard in their representation, along with a copy of the petition and the extracts filed therewith at least 15 days before the date fixed for hearing, full stop, para. The petitioner shall at least 7 days before the date of hearing of the petition file an affidavit of service in relaxation to said publication effected, as well as service of notices on the authorities specified above, including the sectoral regulators, as well as to objectors, if any, full stop, para. Objections, if any, to the scheme contemplated by the authorities to whom notice has been given on or before the date of hearing fixed herein may be filed, failing which it will be considered that there is no objection to the approval of the scheme on the part of the authorities by this tribunal, and subject to other conditions being satisfied as may be applicable under the Companies Act, full stop, over. तो फ्रेंड्स ये हो चुका है लगभग 100 से ऊपर की स्पीड है, ठीक है। और ये कंपनी का मैटर है, इसको ज़रा ट्राई करिएगा, एज ए ट्रायल हमने दे दिया है, ठीक है। बताइएगा कैसा लगा। कुछ ऊपर नीचे स्पीड का हो सकता है, आपको ज़्यादा भी लग सकती है, कम भी लग सकती है। तो ये 500 से ज़्यादा का मैटर है और 100 से ऊपर की स्पीड रखी गई है, ठीक है। तो इसके कमेंट्स वगैरह दीजिएगा और बताइएगा कि इसको आगे कंटिन्यू करें कि ना करें, क्योंकि टाइम की कमी तो वैसे भी है, लेकिन अब कमेंट्स मिलते हैं एनसीएलटी का, क्योंकि 7 या 8 जनवरी को मुंबई एनसीएलटी का एग्ज़ाम है। तो उसके लिए ज़्यादा तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन कोशिश कर सकते हैं कुछ कुछ मैटर्स डाल सकें, ठीक है। तो ये एक जजमेंट है कंपनी का, उसमें हमने ये डाली हुई है। तो एक्चुअली काफ़ी सारे जजमेंट मिलना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए हम इसके मैटर्स को आगे बढ़ाते जाएंगे। मतलब अगर ये पसंद आता है आपको, तो इसके आगे की डिक्टेशंस हम इसमें, क्योंकि मैटर बहुत बड़ा है, तो हम इसको चला सकते हैं, चलाएंगे इसको, ठीक है। तो इसकी पीडीएफ हम डाल देंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, और इसको रिव्यू उसका दीजिएगा, टाइप वाइप करिएगा, ट्रांसक्राइब करिएगा, देखिएगा क्या मिस्टेक आती है, क्या स्पीड आपको लगती है, कितना मैटर आपने टाइप किया, कितने वर्ड्स आए, ठीक है। बाकी इसमें नाम का तो कोई झंझट नहीं है, तो नाम डिस्कस करने से कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। तो चलिए फिर बताइएगा जैसा भी होता है। कमेंट्स, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा, और सब्सक्रिप्शन करने के बाद बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको डिक्टेशंस मिल सके टाइम पे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगले डिक्टेशन में।